Yeah. So susceptibility is how easily a material can get magnetized when kept in an external magnetic field. That's called susceptibility. So based on susceptibility, there are three types of material: diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. ठीक है, ये इसको नोट कर लो. म्यू आर क्या है? व्हाट इज म्यू आर? म्यू नॉट क्या है? परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट? तो म्यू आर जो है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी है. म्यू आर इज इट्स म्यू विथ रिलेटिव टू म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट. और ये जो ये सिंबल है दैट इज कॉल्ड काई, दैट डिनोट्स ससेप्टिबिलिटी. तो ससेप्टिबिलिटी है कितना इंड्यूस हो रहा है अंदर मैग्नेटिज्म विथ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिज्म, राइट? सो अगर वो नेगेटिव में इंड्यूस हो रहा है, नेगेटिव में इंड्यूस हो रहा है मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है अंदर, वो हो गया नेगेटिव. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही बना बट छोटा सा ही बना एकदम. और फेरोमैग्नेटिक जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है मटेरियल के, लेकिन बहुत ज्यादा बन रहा है. तो दैट इज फेरोमैग्नेटिक. ये टेबल बना. What does susceptibility mean again? अभी हो रहा है, याद करो क्या. How easily the magnetic field of the magnet inside gets aligned to the external magnetic field? No. How easily a material can get magnetized when placed in an external magnetic field. And how is it related to permeability? परमिएबिलिटी से ही तो अंदर मैग्नेटाइज होगा ना, कि कितने आसानी से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अंदर जाने देता है. ठीक है, आगे बढ़े. तो अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ यही है कि ये कौन कौन से मटेरियल होते हैं और इनके एग्जांपल क्या होते हैं और कारण क्या है. देयर इज नो क्वांटिफिकेशन. हाँ जी बोलिए. can you show that table? ओके. In the first, like it says permittivity, right? Where? Paramagnetic. What is that E symbol? Isn't Epsilon. That permittivity? That's Yeah, epsilon. that's permittivity, right? Why? Permittivity of space we denote with epsilon, right? हाँ. So that's But the this is same not. thing here, or No, but this is not that. It says here, right? It's a small positive number used to quantify paramagnetic materials. But nice, I like how you guys connect stuff. Good. चलो पहला टॉपिक है diamagnetism. There's no point noting it down right now. So let's just talk about it. Let's just discuss things, and you can note it down later. Okay. So diamagnetic substances are those substances which have a tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. अभी एक बात बताओ, अगर external magnetic field है और तुमने आयन को लेके आया, तो आयन किधर से जाएगा? वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा?
आयन को तुम मैग्नेट के पास लेके आते हो तो आयन वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जाता है? स्पीक इनटू द माइक। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाता है क्योंकि दूर है मैग्नेट से, तो अपने पास चला जाता है मैग्नेट के पास, है ना? तो वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग से वीकर की तरफ जा रहा है, तो इट इज गेटिंग रिपेल्ड, राइट? So that is the case where it's diamagnetism. Why does it happen? When will it happen? जब इसका मैग्नेटिक फील्ड और जो मटेरियल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब वो रिपेल होंगे, राइट? तो जो इसके अंदर इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. दैट्स व्हाई द ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव. ओके? So diamagnetic substances are those substances which have a tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. तो मैग्नेट के पास रखोगे तो दूर चला जाएगा. When a bar of diamagnetic material is placed in an external magnetic field, the field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced. Explanation of diamagnetism. Diamagnetic substances are those substances in which resultant magnetic moment in an atom is zero. When magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down, and those in the opposite direction speed up. This happens due to the induced current in accordance with Lenz's law. Lenz's law क्या होता है? minus d phi by dt is equal to हाँ, the कॉन्सेप्ट में क्या था लेंज लॉ? लेंज लॉ रेजिस्ट्स चेंज इन फ्लक्स. Opposes the cause of चेंज इन फ्लक्स, हाँ, उसके कारण वो करंट क्रिएट करता है. तो एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है which is proportional to the d phi by dt. so change in flux per unit time से वो proportional होता है जो बैक ईएमएफ जनरेट होता है, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी उस तरह से ही होता है जहाँ पे ये चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, the change of the magnetic field lines passing through it. This happens due to induced current in accordance with Lenz's law. Thus, the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field and hence repels. Example: bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen at STP मतलब standard temperature pressure. water and sodium chloride. So ये तुम्हारे सिलेबस में है. अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा व्हाट इज डायमैग्नेटिज्म, व्हाट इज, व्हाई इज इट कॉज्ड एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स. तो ये तुमको नोट करने पड़ेंगे. अभी करोगे, बाद में करोगे, कैसे करोगे? That epsilon which Arya was asking about, that is minus d phi by dt wala. Same. No, that is E. Epsilon is not back EM. Here epsilon is a number. D phi by dt was E. E is the voltage, electromotive force. E. EMF. Over there, E is EMF. Kaveri is so shocked that she's frozen. Oh my god. It's okay, Kaveri, it happens. People make mistake. Blink so that we know you're there. What a face, man. चलो कोई बात नहीं, too many jokes. तो ये अभी नोट करोगे, बाद में नोट करोगे? Later. We do all three, then we learn. Yeah, Kaveri definitely can't note now. Okay. Hi, Kaveri. Sorry, I got disconnected. Could you repeat? You missed everything that we said. Yeah. I don't know if it's good or bad that you missed it. We made a lot of jokes on you. Can you explain the epsilon thing again? Oh, we are still there. Okay.
Yeah, so that is the E d phi by dt wala E is the EMF, which is actually the voltage, the potential difference, right? So it's EMF. It's not epsilon, it's E. Epsilon here is a number. But ये recording देखना तुम बाद में. Okay, Meissner effect. हाँ नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि तुम लोग अभी नोट करोगे एग्जांपल्स, क्या करोगे? We'll do all three and then note it. ठीक है. Actually, we'll do everything. Then I'll end the class. I'll send you this whole stuff. Use this time to note it down and do questions. So Meissner, can we do a few in class? yeah, we'll do few questions in class. Meissner effect. Superconductors exhibit perfect diamagnetism. A superconductor repels a magnet, and by Newton's third law, it is repelled by the magnet. This phenomenon of perfect diamagnetism in superconductors is called the Meissner effect. Superconducting magnets have been used for running magnetically levitated superfast trains. Awesome. Paramagnetism में क्या होता है? जो इनका ये क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? अभी बता रहे. काय. सो जो काय होता है वो नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है, बट छोटा होता है. तो उस केस में वो पैरामैग्नेटिक. The substances which get weakly magnetized in the direction of external field when placed in an external magnetic field are called paramagnetic substances. These substances have the tendency to move from a region of weak magnetic field to strong. That is, they get weakly attracted to the magnet. Explanation: the atoms of the paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment of their own on account of a ceaseless random motion of the atoms known as magnetization is seen. But in presence of an external field B0, which is strong enough, and at low temperatures, the individual atomic dipole can be made to align and point in the same direction as B0. So basically, अंदर जो atoms है वो अपने अपने dipole moment है उनके, लेकिन अलग अलग direction में. तो as a whole, the net dipole moment is 0. But when an external magnetic field is passed through it, थोड़े थोड़े align हो जाते हैं इस तरफ से, right? So थोड़ा थोड़ा magnetic field उनके अंदर बन जाता है in a particular direction, which is the same direction as the external magnetic field. तो इसलिए paramagnetism होता है. The field lines get concentrated inside the material and the field inside is enhanced. When placed in a non-uniform magnetic field, the paramagnetic material tends to move from weaker part of the material to the stronger part. Example: aluminium, sodium, calcium, oxygen and copper chloride. Okay. Curie's law नहीं है. Ferromagnetism. इसमें भी सारे सिर्फ qualitative treatment ही लिखा हुआ है उसमें, तो there's no formula. Ferromagnetism: the substances which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field are called ferromagnetic substances. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get strongly attracted to magnet. Explanation: the atoms in a ferromagnetic material possess a dipole moment aligned in a common direction over a macroscopic volume called domain. तो छोटे छोटे. So we take Curie's law in class, like at least Curie temperature. Yeah, but in the syllabus it's not there. See? Magnetic properties of material: para, dia and ferro. Substances with examples: magnetization of materials, effect of temperature on magnetic properties. Effect of temperature, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा Curie's law. चलो, तो Curie's law भी कर लेते हैं, छोटा सा लॉ है. Curie's law: magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to absolute temperature. I equals to C B naught by T, or equivalently chi equals to C mu naught by T. I क्या है? I नहीं, ये करंट नहीं है, इसीलिए इन लोग को वो नहीं करना चाहिए. I आगे पढ़ाया जाता है यहाँ पे. I is the intensity of magnetization. ये ठीक है, इसका मतलब होता है intensity of magnetization of a magnetized substance represents the degree to which substance is magnetized. ठीक है. It is defined as the net magnetic moment developed per unit volume when a magnetic specimen is subjected to magnetizing field and is denoted by I.
तो ये फॉर्मूला अभी तुम नोट करोगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज C B नॉट बाई T, ठीक है, एंड chi equals to C mu naught by T, where C is Curie's constant. ये graph, the variation of intensity of magnetization with B naught by T is shown in the figure at a particular stage. All the atomic dipoles present in the specimen align in the direction of the external field, and this leads to saturation region. ये अब इसके बाद और मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता क्योंकि सब सारे एटम्स अलाइन हो चुके हैं. तो नोट कर लो क्यूरीज लॉ. What is B naught? Is the magnetic field, the external magnetic field that we have applied. Hello. Yes. Okay, done. Alright. फेरोमैग्नेटिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है बिकॉज हाँ, तो यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्लेनेशन था ना. हाँ, the atoms in ferromagnetic material possess a dipole moment aligned in a common direction over a macroscopic volume called domain. क्या मतलब हुआ उसका, कावेरी? Yeah, क्या मतलब हुआ? the domains are like different parts in within the conductor, and the electrons, they arrange themselves. Not electrons. Yeah. Is it electrons? The atoms. No, atoms. The atomic dipole basically. Yeah, the atoms arrange. They align. They arrange themselves within these domains. That's ferromagnetic. उनका नेट अलाइनमेंट होता है कहीं ना किसी तरफ नेट अलाइनमेंट होता है डोमेन्स. जैसे डाया में क्या था, डाया और पैरा दोनों के केस में ऐसा था कि नेट अलाइनमेंट 0 ही हो रहा था. अगर किसी एरिया को पकड़ोगे तो हर एटम का था डाइपोल, मोमेंट था सबका, लेकिन नेट 0 हो रहा था. बट यहाँ पे एक छोटा सा एरिया पकड़ोगे तो वहां पे एक नेट किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, राइट, इन फेरोमैग्नेट्स. गुड, which means you are able to comprehend sentences. Each domain has net magnetization. When we apply external magnetic field B naught, the domains orient themselves in the direction of B naught, and simultaneously the domain grows in size. ठीक है, अब डोमेन के डोमेन ही अलाइन हो गए तो इसलिए ज्यादा वो हो गया susceptibility. In some ferromagnetic material, the magnetization persists on removal of external magnetic field, such material are called hard magnetic materials or hard ferromagnets. ठीक है. Temporary or permanent? Temporary is one such material which forms permanent magnets to be used among other things as a compass needle. There are some ferromagnetic materials in which the magnetization disappears on removal of external magnetic field, example soft iron. Such materials are called soft magnetic materials. Example. So compass made like by passing
of copper or whatever, and by passing external magnetic field through it, हाँ it तो gets हाँ तो and then वहां से उनको मैग्नेट्स बनाते हैं. so then even if you remove the external magnetic field, it will remain a magnet. In this case it will remain permanent, in other cases it will remain permanent. Okay. Relative magnetic permeability of these substances is greater than 1000. The ferromagnetic property क्या हुआ? I didn't understand how by having domains, ferromagnetic materials are stronger than paramagnetic. Not by मतलब why? The only difference is कि उनमें domains में वो arrange होते हैं ना, तो how does that make it stronger? Because the domains already have net direction of the dipole. तो उस वाले केस में जो पहले वाले केसेस होते हैं उनमें कोई डोमेन्स में नेट अलाइनमेंट नहीं होता, वो हर एक एटम अलाइन होना पड़ता है. तो जब तुम मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो तो कुछ एटम्स अलाइन हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन्स के अंदर एटम्स अलाइन हैं. तो जब तुम मैग्नेटिक फील्ड पास करते हो तो डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, कुछ डोमेन्स अलाइन होंगे तो दैट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड will increase the factor of alignment, right? Why do their domains have it aligned? We don't know. At least in this scope, we don't know. The ferromagnetic property depends upon the temperature. At high temperature, the ferromagnet becomes a permanent magnet. The transition of temperature from ferromagnetism to paramagnetism. Oh, what did I say? Did I say permanent magnet or did I say paramagnet? You said permanent magnet. Oh, okay. At high temperature, the ferromagnet becomes a paramagnet. The transition of temperature from ferromagnetism to paramagnetism is called Curie temperature. Okay. तो अब ये यहाँ पे ये वाला लॉ पढ़ लेते हैं हम, Curie Weiss law. This describes the magnetic susceptibility of a ferromagnet in the paramagnetic region above the Curie point. नोट कर लो. ठीक है. क्यूरी टेम्परेचर क्या है बताओ आर्या, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? The temperature at which the ferromagnetic material loses its properties and it turns into paramagnetic. Basically, it becomes a temporary magnet. नहीं, टेम्पररी मैग्नेट नहीं. टेम्पररी मैग्नेट तो But फेरोमैग्नेटिक भी paramagnetic- होता है. पैरामैग्नेट इज समथिंग व्हिच इज वीकली अट्रैक्टेड टू No, ferromagnet is magnets are permanent magnets. Right? no. Ferromagnets are something that which are strongly attracted, like iron, cobalt, nickel. They're not permanent magnets. But those that become permanent magnets, जो compass needle वाला example था, those are para or ferro? Ferro. हो गया सबको समझ में आ गया? या डन. संस्कृति कोप का तीनों मैग्नेट्स क्या क्या बताओ? पैरोमैग्नेट इज फेरो नहीं, सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला डायमैग्नेट. व्हाट इज इट? उसमें एटम, देयर इज नो डाइपोल बिटवीन एटम्स. नहीं, डाइपोल एटम्स का खुद का डाइपोल था बट दे वर नॉट अलाइन. फिर पैरा में भी था. फिर पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है? दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट.
No, they They are are, repelled. but They are repelled by okay. magnets. Right, they are repelled. तो उनका And, काय क्या होता है? उनका काय क्या होता है उनका? क्या था उनका? उनका काय नेगेटिव होता है भाई। अच्छा, राइट, काय का मतलब क्या है कि कितना कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो। तो इस केस में नेगेटिव मैग्नेटाइज हो रहा है, तभी तो रिपेल हो रहा है। ओके, यस। ओके, नाउ व्हाट वाज द थिंग? हाँ, व्हाई डू दे गेट रिपेल्ड? बिकॉज उनके अंदर उनको नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 रखना होता है। उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे होते हैं, वो जो उल्टा घूम रहे होते हैं वो और ज्यादा घूमने लगते हैं, तो सीधा उनके डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं वो कम घूमने लगते हैं, सो दैट दे मेंटेन दिस नेट डाइपोल मोमेंट एज 0। तो वो हो गया डायामैग्नेटिज्म। उसके बाद हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक में पैरामैग्नेटिक में दे आर वीकली अट्रैक्टेड। अरे भाई, तीन ही तो चीज है, या तो रिपेल होएगा, या वीकली अट्रैक्ट होएगा, या स्ट्रांगली अट्रैक्ट होएगा। रिपेल होता है तो डायामैग्नेटिक है, वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से तो पैरामैग्नेटिक है, और बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो फेरोमैग्नेटिक। अब इनके एक्सप्लेनेशन देख लो। रिपेल क्यों होता है? बिकॉज अंदर वो नेट डाइपोल मोमेंट 0 रखना चाहते हैं, इसलिए जब उनके थ्रू ज्यादा हम पास कराने की कोशिश करते हैं तो रिपेल होके नेट 0 करने की कोशिश कर खत्म। अब बीच वाला जो है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, उनमें नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन जब हम पास करते हैं तो थोड़े बहुत एटम जो अलाइन हो जाते हैं उस डायरेक्शन, इसलिए हल्का फुल्का अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उनके, इसलिए वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फेरोमैग्नेटिक के केस में देयर आर डोमेन्स। तो डोमेन्स में बहुत सारे एटम्स होते हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, सबके सब। तो नेट डायरेक्शन उनका होता है वो डोमेन का। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करते हैं तो डोमेन्स के डोमेन अलाइन हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद या तो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, या तो थोड़ी देर के लिए उनमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म रहता है, क्योंकि उनको डिसअलाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दैट्स इट। तो इनके एग्जांपल सब पढ़ लेना अलग अलग, जैसे कि इसका ये डायमैग्नेटिक का एग्जांपल क्या क्या हो गया? बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये डायमैग्नेटिक के हो गए, रिपेल वाले। पैरामैग्नेटिक के क्या क्या हो गए? एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कॉपर क्लोराइड, ये हो गए। और फेरोमैग्नेटिक में क्या हो गया? एक तो ये हो गया एलनिको, विच इज एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन एंड कॉपर का अलॉय है, या फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वैसे भी अलग अलग भी अपने आप में फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि टेम्परेचर के साथ पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। उसका फॉर्मूला है I = C B0/T, which means intensity of magnetization is inversely proportional to T। ठीक है, यहाँ पे C है क्यूरीज कांस्टेंट दिया होगा, B0 है उस मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हमने उस मटेरियल को, उस वो मैग्नेटिक फील्ड, और T है टेम्परेचर, ठीक है। और एक टाइम होता है जब इंटेंसिटी, ये B0/T के साथ अगर तुम ग्राफ बनाओगे, I = B0/T के साथ तुम ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और एक सैचुरेशन रीजन पे हिट करता है जब वहां पे इसके ऊपर और मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे एटम्स ऑलरेडी अलाइन हो चुके हैं, तो वहां पे वो सैचुरेशन रीजन हिट कर जाएगा। और काई और टी के साथ अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, बिकॉज काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, और काई इनटू टी इज अ कांस्टेंट, उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्यूरी वाइज लॉ या क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तो इस केस में काई = Q